Dr. Prabodh Narayan Singh passed away on the 20th of March 2005 at Kolkata, India, the heartland of Bengali language and culture. The world lost a renowned scholar, linguist, writer, playwright, and a warrior leader in the battle for recognition of Maithili, that rich and beautiful language and culture belonging to a vast sway of people living in the northern part of the Indian state of Bihar. এই আত্মা কখনো জাত বা মৃত হন না, কারণ পূর্বে না থাকিয়া পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম, এবং পূর্বে থাকিয়া পরে না থাকার নাম মৃত্যু। He had transcended the barriers of language, community, and social obligations of various kinds. প্রবোধ নারায়ণ সিংকে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনই বারে বারে ভাবতে হবে, কিভাবে খণ্ডকে অখণ্ডের সঙ্গে মেলাতে হয়, কিভাবে প্রান্তিককে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করতে হয়, কিভাবে নিজেকে নিজের মধ্যে রেখেও বিস্তার ঘটানো যায়, কিভাবে আমার সঙ্গে বিশ্বকে যুক্ত করা যায়, কিভাবে নিজেকে বিশ্বের नागरिक করে তোলা যায়। यानी कलकत्ते विश्वविद्यालय में एक साहित्यिक संस्कृति, एक रुचि के निर्माण में प्रबोध जी का जो संघर्ष था वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ उन्हें जटिल प्रत्याह्वानों से पंजा न लड़ाना पड़ा और निरंतर उन्हें पराजित करके जितनी चुनौतियाँ आई, अपने पौरुष से, अपनी कर्म कुशलता से, अपनी निष्ठा से उन्होंने नए सोपान उपलब्ध किए, ऊंचे सोपान उपलब्ध किए। ये पूरा उनका जीवन वृत्त है। केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, केवल कक्षा की पढ़ाई नहीं, वे हम सबको व्यावहारिक ज्ञान से भी समृद्ध करते रहते थे। मुझे अभी भी रोमांच होता है जब कभी अपने विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाने के लिए खड़ा होता हूँ तो मुझे डॉक्टर सिंह याद आते हैं। वो बताया करते थे कि 5 चरण होते हैं, अगर एमए की परीक्षा में आपको सर्वोच्च अंक पाना है तो इन 5 चरणों से गुजरिए और तब व्याख्या लिखिए, और किसी अध्यापक की मजाल नहीं है कि आपका नंबर काट ले। In spite of its abundant literary heritage and the vibrant culture it had spawned over the centuries, Maithili suffered appalling neglect in the early 20th century. Apathy on the part of its native speakers was a major cause for this neglect, as was lack of official patronage. In post-colonial India, another alarming trend was noticed: the concerted effort to marginalize Maithili by a section of powerful political leaders. This attempt almost succeeded, helped by ineffective social leadership from an apathetic Maithil intelligentsia. Prabodh Narayan Singh struggled almost single-handed to restore Maithili to its original glory and to motivate more and more people to honor its glorious tradition. The world over, documentation and archiving of events, people, and material is assuming tremendous importance. Dr. Prabodh Narayan Singh's life, work, and achievements require documentation not only for Maithili-speaking peoples, but also for the entire humanity. The life and times of Prabodh Narayan Singh is also a poignant story of the regeneration of the Maithili language and culture in post-colonial India. It is truly astounding how a boy from a tiny, remote and poverty-stricken village became a personality of such stature and importance
by sheer dint of his own efforts, his thirst for knowledge, and single-mindedness of purpose. For us ordinary people, Prabodh Narayan Singh was an ideal teacher, a superlative human being, and an outstanding social scientist. Let us go to his village, Samora, where he lived during his childhood nearly 8 decades ago. A 16-hour train journey from Kolkata takes us to Saharsa, a small district town and railway junction. The 28-kilometer road from Saharsa to Samora is truly charming, with lush green farmland on either side and twists and turns through many quaint villages. Prabodh Narayan Singh was born on 12th February 1924 at Pastpar village in Madhepura district of North Bihar, about 43 kilometers away from his native village of Samora. Pastpar was the home of his maternal uncle, a land-owning farmer, and he grew up alternately at Pastpar and Samora, where his father Sridhar Prasad Singh was a small farmer. ये जगह जे छै ई पस्तपार नाम से छै। जन्म एते से बचपन में एते रहती। मनोहर हाई स्कूल सहरसा में पढ़लखिन। ओहि समय में 42 के मूवमेंट में जब मनोहर हाई स्कूल के हेडमास्टर के ये भेले कि प्रबोध नारायण सिंह को रहने से यहाँ विद्यालय में अंग्रेज का छापा पड़ेगा और हम लोग परेशान होंगे, तो इनका जब एक्सपेल नहीं क्या क्या जबरदस्ती टीसी देकर वहाँ से हटा दिल गए। प्रबोध बाबू के माँ हमार पिताजी जो प्राचीन समय के गोप करे रहथिन वह जो हम सुनलिए वही आधारित हम सब कहानी करिए। Prabodh Narayan was the oldest of 3 children born to Jaya Devi and Sridhar Babu. Initially taught by his father at home, Prabodh Narayan later went to study at the primary school in Shahpur, an adjacent village. Prabodh Narayan's father, Sridhar Prasad Singh, was a man ahead of his time, a self-taught but well-read person who was well known in the area for his wisdom and innate sense of justice. Ably assisted by his wife, a pious lady of immense grace and resourcefulness, Sridhar Babu brought up his children very well under the adverse economic circumstances. To this day, a large part of North Bihar gets inundated by the river Kosi every year during and after the monsoon rains. Vast tracts of land are rendered uncultivable for almost 4 months. Because of this, Sridhar Babu found it very difficult to improve his family's financial condition. This hardship was made worse by the devastating earthquake of 1934, when thousands of people were killed and many more rendered homeless. दुआर रहे ईटे के, आब बाबूजी के स्कूल जो कहलिए से रहे ईटे के, तो वह भूकंपे में न गिरले दुआरो बाबूजी के स्कूलों, तब दा भाई नाम लिखलखिन वहाँ जाकर सहरसा। In spite of responsibilities to help his father with farm duties, Prabodh Narayan was nevertheless a diligent and focused student even as a child. Noticing his early brilliance, Chandeshwari Prasad Singh, a prosperous older cousin, took him to Shah Alam Nagar for his middle school studies. He completed middle school in 1938.
For his high school studies, he joined the Manohar High School in Saharsa, which was a subdivisional town in those days. We heard some very interesting anecdotes about his childhood from Ajay Singh, his younger son. These emphasize his constant thirst for knowledge, his brilliance, his leadership qualities, and his strength of character. One of his peculiarities was his reticence about his past, his refusal to talk about or brag about his achievements of the early part of his life. We had practically not heard anything from him directly about his own deeds and exploits, but I heard a lot from my grandmother and my Buaji, that is my father's only sister. Destiny has its own way of preparing people for what is to come. In his childhood, he had a lot of curiosity about Bengal and Calcutta. This was in no small measure encouraged by my grandmother, that is his mother's command over the Bengali language and the script. She would recite the Mahabharata and he would listen to that and inquire as to the script, the people who speak the language and the place. This was as if to prepare him for what would be his calling in the later part of his life. चल कबड्डी हर चल कबड्डी आरल सुल्तान गढ़ অদ্ভুত তাহার কর্ম নাহি দেখি শুনি একমুখে কি কহিব তাহার কাহিনী লন্ড ভন্ড করিলে কপ্রমিত সেনা যতেক পড়িল তাত নাহি কো গণনা দয়া করি তোমারে সংকটে আমাতরি পুরুষ সৈন্য হইতে গাভী দিলেন যিনি নাই আমি পিতা কুরু সৈন্যগণ মুক্ত করি নাহি আমি একটি গোধন শুনিয়া কহিল রাজা কহ পুত্র মোরে सुल्तानगंज हारल কি হেতু সে দেবপুত্র हे रे चुप रह बे हमरा पढ़ा देबी कि ने जो बाहर जाके खेल কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে কোথায় নিবাস তার গেল সে কোথায় পুনর্বার দেখা কি পাইব আমি তাই উত্তরে বলিল তিনি আছেন এই দেশে আজি কিংবা কালি কিংবা তৃতীয় দিবসে ई कौन अक्षर छे माय ई बांग्ला छे ई तो दूसरे रंग छे तू केना सिखली हमरा बाबूजी सिखेलखिन एकटा बांग्ला किताब देने रहतिन किन के हमरा शिशुबोध वह पैर के सीख लिए कते मेल छे अपन बोली से ने हाँ बांग्ला कते बोले छे माई बांग्ला बंगाल में कते दूर छे बंगाल यही ठाम सा की जन गेलिए कुंडू डॉक्टर कहे छे 100 कोस से बेसी दूर हम पढ़ने रही है कलकत्ता शहर छे बंगाल में कलकत्ता कते दूर छे माई बहुत दूर बड़की काके गेल रहथिन पोरका साल कहे रहथिन गंगा सागर के रास्ता में पड़े छे केना जाय छे माई बैलगाड़ी पर इतने दूर बैलगाड़ी जेते सुन लिए गंगा जी के काते कत चलल जाए तो कलकत्ता शहर आब जाय छे
स्वाधीनता संग्राम में हमरा सबके ककरो जे योगदान रहे अंग्रेज के खिलाफ से बहुत वायलेंटली खिलाफ ई नहीं जे कोनो ऊपर से सब में प्रबोध एक्टिव थी 42 के आंदोलन उसमें जनरल मास पुलिसो हमरा सबके साथ दी पुलिस के साथ कुछ खबर कह दियो 3 बेर 4 बेर सर्च मिला हाँ ऑर्डर अभी सीधे गवर्नर कम से अंग्रेज गवर्नर रहे उसमें